नमस्कार। एनआरआई अफेयर्स पर आपका स्वागत है। भारत के एक युवक विशाल जूट को ऑस्ट्रेलिया में मारपीट करने और तोड़फोड़ करने के मामले में सजा हुई है। इस मामले में काफी पहले से राजनीति आ गई थी और एक मामूली अपराधी विशाल जूट को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विशाल जूट को 15 अक्टूबर को रिहा कर दिया जाएगा। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि अदालत ने क्या फैसला दिया है, और इसमें हम मदद ले रहे हैं वरिंदर पवार की, जो कि एक क्रिमिनल लॉयर हैं और सिडनी में प्रैक्टिस करते हैं। तो जज ने अपने फैसले में कहा कि विशाल जूड को जेल में समय बिताना होगा। उन्होंने कहा कि विशाल जूड को 12 महीने की जेल होगी, जिसमें 6 महीने नॉन पैरोल पीरियड है। चूंकि विशाल जूड को 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, यानी वो 4.5 महीने से जेल में है, तो 15 अक्टूबर को उसका नॉन पैरोल पीरियड खत्म होगा। इसका मतलब क्या है? So basically what happens is when somebody is sentenced to a term of imprisonment more than 6 months, they get a term of the total sentence, and then there's a portion which must be spent in actual jail. So that's called the non-parole period. Non-parole means you're inside the jail behind bars. When we talk about the parole period is a time that a person is eligible for release into the community, but they're subject to various types of supervision and requirements and stuff like that. So basically, in terms of the sentence, you have a portion that is non-parole and portion of parole. So from what you said, that he's already spent some 4 months and 17 days. That means in NSW, what happens is if you're in jail for an offence, and say you're in jail from today, but your sentence happens in 3 or 4 months' time, then your actual sentence of imprisonment for that offence starts from when you first went into jail. So it sort of becomes like a credit type thing. So that's what's happened here. He was in jail, obviously, 4 months, 17 days previously. And then he has a remaining 1 month and how many days left before he's eligible for release. तो ये कहना कितना सही है कि विशाल जूड 15 अक्टूबर को रिहा हो जाएगा? It depends on obviously the Department of Corrective Services and the parole board in relation to the parole side of things. So parole is not automatically granted. So after the 6 months of the total non-parole period, the board or members of the board determine whether or not you should get parole. So it's not an automatic given. But like I said to you, in this matter, there's immigration implications as well. So you may find that the person may actually be released, but then not into the community, but possibly into immigration detention. It just depends on the way both departments are handling it. तो 15 अक्टूबर को अगर विशाल जूड जेल से बाहर आता भी है, तो वो पैरोल पर होगा, और फिर क्या होगा ये निर्भर करता है उसके वीज़ा स्टेटस पर। ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी विदेशी को 1 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, तो उसका वीज़ा आमतौर पर रद्द कर दिया जाता है और उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। So I don't know what type of visa he's on and what the status is, but the Department of Immigration have various policies and also legislation in relation to character tests and mandatory visa cancellations. So a person that's spent 12 months or more imprisonment usually has their visa cancelled. And you'll find in this instance where a parole period has been set, that more likely than not, obviously it's up for both departments, but usually correctives and immigration will exchange information, and usually a person such as this, once they're granted parole, the immigration department are notified, and if they're an illegal person, then usually they can be taken into immigration detention and then deported as per the procedures. और किसी देश से आपको डिपोर्ट किए जाने के भी सीरियस इम्प्लीकेशंस होते हैं। यदि किसी को ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट किया जाता है, तो क्या उसे जीवन में दोबारा कभी वीज़ा मिलेगा? It's up to once again, it's up for the Department of Immigration of Australia to determine that. But look, common sense says is that if a person from another country comes to Australia, does a very serious crime,
gets sentenced to imprisonment here and then deported back, when that person applies for another visa to come to this country again, I think most of the people would say no. It's up to the Department of Immigration to make that determination, but I think common sense will probably say no. अब आप ये सोचिए कि जिस शख्स को अपराध करने के लिए किसी देश से निकाल दिया जाए, क्या उसे आप इंडियाज प्राइड या भारत का गौरव कहेंगे? यहाँ ये बात भी स्पष्ट करनी ज़रूरी है कि विशाल जूड ने न केवल अपने अपराध कबूल किए हैं, बल्कि उसके वकील ने सज़ा कम कराने के लिए जो दलीलें कोर्ट में दी, उनमें ये बात भी शामिल थी कि जूड ने जो किया उसका खालिस्तान या सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने खुद कहा कि जिस युवक पर हमला किया गया उसका खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, यानी विशाल जूड तिरंगे के लिए या खालिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए जेल में नहीं है, सड़क पर मारपीट करने और तोड़फोड़ करने जैसे मामूली अपराध के लिए जेल में है। तो क्या हमारे देश को ऐसे लोगों पर गर्व हो सकता है? ये आप सोचिए।